All right. So moving back to number one, reflection of light. Before I start with reflection of light, remember that whenever we talk about light, light is something due to which we can see everything around us. Okay? Whatever we see is basically light bounces back from that object. It enters our eyes, and due to that reflection, we can see objects. Due to that reflection, we can see objects, right? So basically, light travel in straight lines, which are known to be rays. लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है जिसको क्या बोलते हैं बेटा रेज बोलते हैं राइट इसी तरीके से if all light is absorbed if all light is absorbed by a surface then that surface looks black if all light is reflected from a surface then that surface looks white if you have just one light ray traveling in a straight line, that's known to be a ray. But if you have more than one light rays, that's known to be a beam. That's known to be a beam, right? इसी तरीके से पता नहीं उसको पता था अभी क्लासेस all right, so it's known to be a beam. If I talk about beams, there are three types of beam. We could have a convergent beam, we could have a divergent beam, we can have a parallel beam. All right. What's a parallel beam? When all the light rays are parallel to one another, just like this, that beam is known to be a parallel beam. When all the light rays are spreading out from a single point, that beam is known to be a diverging beam. When all the light rays are coming from some source and joining at one point, that beam is called converging beam or convergent beam. Okay? So you have these three types of beams. Then you have two types of bodies. Either you have a luminous body, a body which produces its own light, or you have a non-luminous body, a body that reflects light from a luminous body. That reflects light from a luminous body. That means it does not have its own light, rather, it reflects the light from other luminous bodies. There are some terms that we should know at the beginning of the chapter, and that is number one, normal. Normal is basically a line perpendicular to the surface, a line 90-degree to the surface, a line at a right angle to the surface. Then you have an incident ray. An incident ray is a light ray that strikes the surface, a light ray that hits the surface, a light ray that meets a surface. Reflected ray is a light ray that bounces off the surface after striking. A light ray that bounces off the surface after striking. Then you have refracted ray. Refracted ray is a ray that penetrates and then change direction after striking the surface. Then you have another ray or another term which is called angle of incidence. It's the angle made between normal and incident. Normal and incident ray. And then you have angle of reflection. It's an angle made between normal and reflected ray. Normal and reflected ray. All right. Let's suppose this green, this green, this green is a surface. This green is a surface, and you see ray 1, ray 2, ray 3, and ray 4 striking the surface. All these light rays, if you look at them, are perpendicular to the surface, are normal lines to the surface, right? They are normal to the surface. If you have this green surface once again over here, you make a line yourself, just trace a normal line, a line that's 90-degree to the surface, and then you do what? You strike a light ray. This light ray is known to be incident ray. This light ray is known to be incident ray.
because it's striking the surface, and incident ray is the ray that's striking the surface. This light ray, after striking the surface, will do what? It will bounce back. What will it do? It will bounce back. So this is the reflected ray. This is the reflected ray. The angle that this ray makes with the normal is called angle of incidence. It's called angle of. Remember that the angle of incidence is always measured from normal. Always measured from, meaning you will put your protractor this way. This would be your 0, 5, 10, 15, 20, 30, and so on. And this is how you are going to measure the angle of incidence. All right. इसी तरीके से लिखा होगा कि इंसिडेंट का जो रे है जी वो बताओगे कि इंसिडेंट रे या वो बताएगा कि इंसिडेंट रे बना दो. Similarly, if you are talking about angle of reflection is also measured from normal, right? So it's between the normal and the reflected ray. It's between normal and the incident ray. All right. So again, you will, if you need to measure the reflected angle, you will put your protractor this way, and then you will start measuring from here. It's 0, 5, 10, 15, 20, 25, and so on, right? So your angle is to be measured from where? From normal. Always angle is measured from normal, always, right? And then this is once again another surface, and you see that this light ray is incident to the surface. This light ray is incident to the surface. If there would have been no change in medium, this light ray should have gone straight like this. Is it? But since there's a change in medium, this light ray will not follow the initial path. Rather, it will change its path, and let's say it will bend away from the normal. It will bend. Got it? So again, you see that the angle of incidence is what? Angle of incidence is the angle made between normal and the incident ray. Angle made between normal and the incident ray. And angle of reflection is what? It's refraction, my bad. Refraction is the angle made between normal and refracted ray. Angle made between normal and refracted ray. Got it? Any problem, any confusion? Okay. Then you have reflection. I have already discussed this with you. Its definition is formally written here. Reflection is bouncing back of light after striking a surface. Bouncing back of light after. So the one liner for reflection is what? Bouncing back. Bouncing back. Right? So the first thing that we are going to see now is laws of reflection. There are two laws of reflection. Law number one, that whenever a light ray strikes a surface, just like in this case, remember that always the angle of incidence and angle of reflection would be the same. Angle of incidence and angle of reflection would be the same, right? Whenever a light ray strikes a surface, incidence and angle of reflection would be the same. So I can write it over here. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Got it? Ahmed bhai, थोड़ा सा glass पानी पिला दे. जी हाँ. Right? So the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of, and then there is this all-time known law that the normal, what is normal? 90, a line 90 degree to the surface. The normal line, the incident ray, and the reflected ray, they all lie in the same plane. They all exist in the same plane. Same plane means same surface. Same plane means you can draw all of them on a single page. You can draw all of them on a single page. Got it? Hina and Vadha. Yeah, yes, Is this clear? yes, yeah. ओरिजिनल स्क्रीन है बेटा. नहीं टीम्स नहीं है, ये वही स्क्रीन है. टीम से भी वही स्क्रीन आ रही है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ. ये लो. ठीक है. So, any problem? Any confusion so far? No, no. All right. There's a small experiment which we need to know. So, to verify the law of reflection.
The apparatus that we are going to be needing for this experiment is number one, an A4 size paper. I'll try to do this experiment in the class, and then जो यहाँ पर है नहीं, you can observe from there online as well. लेकिन we'll be doing this experiment someday inshallah soon. So you need an A4 size paper. You need a plain mirror. You need a pencil and paper. Sorry, pen or pencil, and you need a ray box. Ray box is basically a light source, right? And we are using a ray box, not a torch, because torch has its light spread out. We will not be able to get a single line. So in order to have a single line of light, we use a ray box, or we use a laser, right? So what we will be doing that we'll take our A4 size paper. Just I'm remaking this diagram over here so you can know that how this all came into existence. See, this is your A4 paper. You will place your mirror right here, vertically upright. Okay, exactly. These type of questions are asked in ATP as well. And this is the line MN that you are going to make along the mirror, right? So when you place the mirror, you need to make an outline of the mirror. You need to make an. Can someone guess why is this outline needed? Outline बनाने की जरूरत क्यों होती है मिरर के साथ? ताकि if the mirror dislocates during the experiment, you can relocate it. You can relocate it, right? And then you will make a line at the center. And this is what line? Normal. You will make a normal line at the center, right? And then what you will do, you will measure an angle. Let's say you measure 20 degrees, and you is what you have made is known as incident ray. You have made an incident ray. You have made an. So on this incident ray, you will place your ray box, and that means you can shine a ray from your ray box along this line, which is, let's say, at an angle of 20 degrees to the normal. This light will reflect back, and this will reflect back, let's say, somewhere over here. So this is the reflected ray. This is the reflected ray. Now, if I remove the ray box, will this ray be there? No, this will fade away. It will go. It will no more exist. So I have to trace its path. What I'll do, I'll pick two optical pins. I'll pick two optical pins and place it on this ray. When I place two optical pins on this ray, will these pins leave a mark on the paper? So now, when you remove the ray, you remove the pins, you can join these two marks, and you will obtain a line. You will obtain a. This line is what? Reflected ray. And then you will take your protractor and measure this angle. So this angle is the angle of reflection. If you have done your experiment correctly, you will find that this angle is also approximately 20 degrees. An error of plus minus 1 degree is allowed, but if you have done it correctly, you will get an answer of 20 degrees. Hmm? You will make more angles over here, 20, 30, 40, 50, right? And you would repeat the same procedure for all of them. You would find that always the angle of incidence is equals to angle of reflection. So this is the law of reflection. Got it? Any problem? Any confusion? Hmm? Okay. Having done this, all this procedure which I have demonstrated just in front of you is written here. Okay, so if you have any problem writing it, you can just refer to this. Then you have types of reflection. And when we talk about types of reflection, we have two types of reflections. Number one, it's the regular reflection, and number two, it's diffused reflection. Regular reflection and diffused reflection. If I talk about regular reflection will occur at what type of a surface?
shiny surface, white surface, smooth surface. And diffused reflection takes place in which surfaces? Rough, dull. All right. So diffused and regular reflection. You have two types of reflection, diffused and. Now, another classification of diffused and regular reflection is this, that let's say if I consider the first one to be the smooth reflection, you will find that all the incident rays are parallel to one another. All the incoming light rays are parallel to one another. And so are all the reflected light rays. They are parallel to one another. So in a regular reflection, what you will find that all the incident and the reflected rays are parallel to each other, right? So one more thing that we need to analyze over here is that every angle of every ray, every incident and reflected ray will obey law of reflection, and that is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Every light ray will obey this law. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. All right. Okay. Then diffused reflection. In diffused reflection, you will find that all the incident rays are parallel. All the incident rays are parallel to each other. Yeah. But all the reflected rays are diffused. The reflected rays are not parallel to each other. You see, one ray goes like this, the other goes like this, the third rays. They are all dispersed. They are all diffused. So, in a diffused reflection, this is what you will find. Now, let it be regular or diffused reflection. Law is law. Law will be obeyed. So let's say this first case, this is the incident ray and the other one is, so now this is the surface, this is the normal to the surface. You will find that the angle of incidence and angle of reflection are equal. Angle of incidence and angle of reflection are equal. Then in the next one, you would find the same thing, that the angle of incidence and angle of reflection are, now this is the surface. This is the surface, and you will find that this is the normal line to the surface. So angle of incidence is equals to angle of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Are you getting the point? Hmm? This is the surface now. This is the normal line to the surface. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Right? So law is law. Law will always be obeyed. Right? Any problem, any confusion? Then we have another experiment and another concept in which we'll go on and we'll find the position and characteristics. The position and of what? Of an image. Of an that is formed where? In a plane mirror. Position and characteristics of what? Of an image that is formed in a plane mirror. Got it? Any problem? Any confusion? Girls there? Hina? Fadaha? It's clear. All right. So again, I'll repeat this experiment for you people once again. Although it's already done here, but I'll just go one step. जी, but ये थोड़ा सा different है. For this one also, you need what? You need an A4 size paper, right? A4 size paper. You need a plain mirror. You need optical pins. You need pencil. Do you know what is an optical pin? Have I discussed it? Optical pins is whenever you go and buy new clothing, so you will find that those collars and cuffs have those needle type of pins attached to them. What we call the office pins too. Those are known to be optical pins. Those are known to be optical pins. So optical उसको office pins भी कहते हैं. Government offices में they are used to attach bundles of papers together, right? So basically
Those are not tags, pins, needle की तरह होते हैं, needle की तरह होते हैं, and usually females also use it in their abayas. बिल्कुल पतले से pins होते हैं, ठीक है? So they are just like nails, right? But they are very thin, very small. We call it optical pins. All right, so what you will do, you will need A4 size paper. Once again, you will place the A4 size paper just like this, and on the paper you will keep your mirror vertically upright. You'll keep your mirror vertically upright, and then you will draw an outline to this. Why is an outline needed? Yes, so this is the line. Let's label it as M and N. You can label it as P and Q, A, B, whatever you like, right? So you draw this line, and now you will place a pin in front of it. You will pick one of the optical pin, place it right in front of it, and let's say you place it here, right? So this is called the object pin. We will call this the object pin. We will call this the. All right, I'm standing, let's say here. Can I see the image of this pin here? If I'm standing here, once again, I can see the image of this pin here, Murk. If I'm standing here, I can see the image of this pin here. I'm standing here, I can see the image. I'm standing here, I can see the image. I'm standing here, I can see the image, right? Is it? So, Mariam, what would happen next is that I have so many positions, but I'll just select two. Let's say I select one position over here X and I select another position here Y. First, I'll view the image from X, and when I view from X, definitely I will see this object's image over here in this mirror, right? In this mirror. So I look at the image, and in front of the image, I look at the image, and in front of the image, I'll place a pin, an optical pin. I'll place an optical. Let's call this optical pin P1. So when I look at the image, I place a pin in front of the image. What can be concluded? It can be concluded that my pin is right in front of the image. When my pin is right in front of the image, that means my pin and image are in one line. My pin and image are in. I'll pick one more pin and I'll place it such that I place it right in front of P1, pin 1. So now what I'll identify that my pin 1 and my pin 2, all three are in one line. All three are in, and I'll make sure that I look at the bottom of the pins. I look at the bottom of the. Why is looking bottom of the pin necessary? Because it's possible that the pin tilts like this, like this, like this, like this, right? If you're looking at the top of the nail, you would not be looking to the right position. But this bottom is always at the same position every time. Is it? So always when I'm looking at the pins, I'll be looking at the bottom. I'll be looking at the bottom. Are you getting this point? Hmm? Similarly, when you are placing the two pins, you need to make sure that the distance between the two pins is at least 5 centimeter apart. In experiment 1 also, we saw that we were placing two pins. You should make sure that the distance between them is at least 2 centimeter. This is a precaution. Approximately, I mean, okay, let's say 5 centimeters is our distance about this length, right? 5 centimeter is this distance. So you place one pin here and the other pin a little beyond this. Got it? बात समझ आ गई? Okay, so you are done with the experiment. You are done with the experiment. What you will do now is just repeat. जो basic experiment था, you are done with that. You will just repeat. Now you repeat from position Y. Repeat from position. You will look here at the image once again. You will pick another pin. Let's call this P3, and you will place it right just in front of the image. In front of the image. Then you will pick another pin P4 and place it right in front of P3. So what you will see now is P3, P4 and the image are in one line. P3, P4 and the image are in one line. P1, P2 and the image are in one line. And this was the object pin. This was the object pin. This was the object pin.
object pin, right? Understood? Any problem? Any confusion? What's the y? There are two positions. एक को मैंने mark किया position X and the other I marked it as position Y. No, these are just two different positions from where I'm looking at the mirror. Exactly. This is my eyesight. All right. Got it? Any problem? Sir, हाँ. Question भी करा था इसका मैं. यहाँ तक बात clear हो गई? Okay. सबसे पहली बात ये हो गई. उसके बाद what you will do? You will remove the mirror. You will remove the you will remove the mirror, but make sure जो outline बनाई है it's there. You will remove P3 and P4, and as you remove them, you mark their points. You will remove P1 and P2, and as you remove them, you mark their points. All right, you have points marked. What you would do? Pick a scale and join P1 and P2 and extend your line. Right? What you would do next? Pick your scale and join P3 and P4. Join P3 and right, P3 and P4 and extend the line. You would see that this is the point where the two lines intersect. This is the point where the two lines intersect or meet. The point where the two lines meet, the point where the two lines intersect is the image of O. Is the image of O. Got it? The point where the two lines meet, where the two lines intersect, is the image of O. Got this? Now this image which is formed, this the object is the same as the distance of the image from the mirror. Distance of object from the mirror is the same as the distance of the image from the mirror. So whenever you have a plane mirror formed, its image, an image formed in a plane mirror, its distance would be the same as your distance. Have you ever observed as you approach the mirror, your image approaches you? Because the distance between you and the mirror is reducing, so the distance between you and your atma is also reducing. Similarly, if you enter a shop, you would find that the shop looks very wide, but actually it's small. Why? Because the mirror that has been placed is placed right behind the shop. So जितना जैसी shop में enter होते हो, उतने ही distance आपको और मजीद नजर आ रहा होता है. Similarly, you might have seen the optical testing systems, a little classical one, where there's this board placed on top of the patient's eye, and then there's a mirror placed some distance away. And then the doctor asks you to read each of the alphabets and he tests your eyes. Basically, he has a smaller room, but he has doubled the distance. So the properties of image formed in a plane mirror, property number one is that the image distance and the object distance would be the same from the mirror. Image distance and object distance from the mirror would be the same. Number two, object and image would be of the same size. If you approach the mirror, does it happen that you look smaller or larger than your actual size? No, you look the same size. आप अपना height भी measure कर सकते हो आराम से. So basically, the image formed in a plane mirror is the same size as the object. The image distance and object distance from the mirror is the same. Two properties. Property number three, the image is vertically upright. The image formed in a plane mirror is vertically upright. What do you mean by vertically upright? Matlab, when you approach a mirror, your head seems to be at the top, your feet seems to be at the bottom. ऐसा तो नहीं होता ना कि you look upside down in the mirror. So the image is vertically upright. The image is vertically upright. So same distance, same size, vertically upright. Number four, the image is laterally inverted. The image is laterally, meaning the left side looks right and right side looks left. It's horizontally flipped. It's horizontally flipped, right? Property number four ho gayi. Property number five, if I bring a hammer and break the mirror, will your image still be there? It will be dispersed. I broke the mirror, it all down. कुछ नजर हाँ
नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब वो धोखा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, है आपको वैसे ही नजर आ रहा था। द इमेज इज वर्चुअल, द इमेज इज virtual. So you have 5 properties of the image formed in a plane mirror. 5 properties of the image formed in a plane mirror. Number 1, it's the same distance. Object and image distance is the same. Number 2, it's the same size. Number 3, it's upright vertically. Number 4, it's laterally inverted. And number 5, it's virtual. It's virtual, right? नहीं, real तो सिर्फ lens में होती है, and वो भी कुछ cases है, right? Real image is an image which you can see on a screen. So वो भी virtual है ना, वो किसी screen पे तो form नहीं हो रहा ना। हाँ पहनते हैं ना, तो बस वो वही है, अब वो हटा दो फिर नजर थोड़ी आएगा। That's in lens. वो लगता है ना, है तो नहीं। अपना इमेज कितना रियल है, अपने से रियल कोई चीज होती है नहीं, लेकिन जहाँ शीशा टूटा कुछ भी नहीं। हाँ मतलब देखो, अगर अपनी इमेज रियल होती ना तो वहां सर पे हथौड़ा मारो मिरर में, अपने को चोट लगनी चाहिए ना, नहीं लगती। दीपक कर रहे हैं आप शायरी। चलो, ऑलराइट हिना एंड वधा। Yes, sir. Alright, Yeah. Vada, we are all studying about you. No? Oh, yeah. I got it. Alright. So, for those who are new, भाई वधा का मतलब होता है लाइट। जैसे मुड का मतलब है स्माइल, तो वधा का मतलब क्या है? लाइट। चलो आगे बढ़ते। all these properties I have told you the precautions too. So देखो इतना सारा कुछ लिखा था, तो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। काफी तेज चल रहा है ना। So let's take some time out from this busy schedule and note some stuff down. ये छापो बेटा जल्दी से। All who has not done this, जल्दी से। लेंस पढ़ेंगे। लेंस की वीडियो मैंने भेजी, अगर आपको बहुत जल्दी है ना तो वीडियो मैंने आपको ग्रुप में भेजी, आप लेंस की वीडियो देख लो। हाँ तो देख लो ना, मैंने कहा वही वो मैंने बड़ा शॉर्ट करके पढ़ाया और बड़ा क्रिस्प। हाँ मैंने अभी परसों पढ़ाया था वो क्लास में इसी जगह पे। हाँ ग्रुप पे भेजा है मैंने। I just taught it in the same class at the same position. सब में भेजा। ठीक है, आप लाइव मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, उस पे मिल जाएगा आपको। लाइक शेयर कमेंट भी कर दूंगी। क्या है ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, आप दांत पीस लो और काम कर लो जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। वो भी तो साथ साथ कर रही थी, तुमने साथ साथ क्यों नहीं किया? मैं समझू ना करूं। ओके ओके चलो, नाउ बी फास्टर। So when you do one thing at a time, you are relatively faster than. कुछ क्या टाइम हो रहा है? ट्राई जरा जल्दी जल्दी छापो, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। मुझे मैंने बुकलेट दे दी थी P2 की आप लोगों को। हाँ वो लैवेंडर वाली ना। Sir, did you give the booklet to Miss Lubna? Yeah, I have given 2 of them. The other 2 are in printing process, and I'll probably give them by tomorrow or day after. You tell me one thing. Your father, when's he gonna be leaving? He'll come back on 12th December. 12th December. All right. So inshallah, the books will reach him before that. Okay, sir. Thank you. Okay.
5 more minutes and then फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। आज जिन्होंने छाप ली है, आपने छाप ली है बेटा मोर? मैं वो बनाऊंगी आखिर में, क्या डायग्राम ही बनाना है। अच्छा, जिन्होंने छाप लिया वो जरा पेज 139 पे आ जाए। पेज 139 पे क्वेश्चन 1 ट्राई करें। 141 पे ट्राई करें। 139, 141, 139 पे सिर्फ पहला क्वेश्चन, राइट? ये फोकल लेंथ को करने के लिए इसके से करना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, अभी वो वाला मैंने पढ़ाया भी नहीं। Sir, it's done. Can you scroll down? 154 पे क्वेश्चन 29 और 155 पे 31। हो गया। 156 पे 34, 159 पे 39, 161 पे 43, 162 पे 45, 164 पे 50, 164 पे 50, 164 हाँ, 169 पे 58 और 57 भी, 170 पे 60, 173 पे 66, 175 पे 70। Alright, done? जिन्होंने डायग्राम्स बना ली और ये लिख भी लिए, आप लोग वो वाले क्वेश्चंस पे जरा जाओ। आप ट्राई करो, जब मैं डिस्कस करूंगा फिर हम कर लेंगे, जब तक आपको ट्राई करो। सिर्फ 142 दिया था आपने? पता नहीं, मुझे देख लो। अच्छा, मिड आपका फोर्थ को है? फोर्थ को मेरा वो है इंग्लिश है, 17th को फिजिक्स है, 6th या 7th को मेरा फिजिक्स। अच्छा, अभी 6 बजे मेरी बॉयज़ के साथ क्लास होगी तो उसमें मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा। रिफ्लेक्शन पढ़ा दी, उसमें मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा एंड लेंस की मैंने वीडियो भेज दी। सही है। सो ये आपका पूरा लाइट का चैप्टर, अगर आप चाहो आप आज के दिन पूरा कर सकती हो। तो लेंस वाली वीडियो वो देख लो। बॉयज़ के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो या फिर मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा
तो मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। सही है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो सही है क्लास में, लेकिन मैं अगर आप किसी को मिड टर्म की जल्दी है तो वो इस तरीके से कवर कर सकता है। Yes, sir. It's also done. It's done. All right. मरियम समझ आया सब? थोड़ी सी आपको भगाना पड़ेगा, मसला नहीं है, कर लोगे आप। आपका तो 4th को है ना पेपर फिजिक्स का, P2 और P4, P1 4th को। आपने सारे कर लिए जो मैंने मार्क करा है? तो आगे भी करो ना, जो मार्क करें वो सब ट्राई करो जब तक आप। सब आ रहा है? Is there anything specific that you would want assistance in? कोई specific topic? सब हो गया, चलो बस। सर एक चीज है मुझे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं चाय भूल गया, देखो यार। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आसान है बेटा। एक मिनट यार, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ पढ़ा रहा था? चलो उसके क्वेश्चंस करा दूंगा। और बोलो, 4th को है ना? नहीं 4th को नहीं है, 7th 8th 6th को है। 8th को तो मेरी मैथ्स है और लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बेटा सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरे सिलेबस का, आपके भी सिलेबस का नहीं है। मैं आपके सिलेबस को जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? लेटेंट हीट स्पेसिफिक, लेटेंट हीट कैपेसिटी नहीं है। मोबाइल है? मोबाइल नहीं है? ऑसिलेशन नहीं है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। 065 कल ही तो मैंने खोला था सिलेबस। 065 नहीं है बेटा, लेटेंट तो इस सिलेबस में नहीं है। स्पेसिफिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स इज बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के अल्फा गामा बीटा रेडिएशंस, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन।
Sir, can you scroll down to reflection? Good, shabash. नहीं भाई, मैंने अच्छे से देख लिया। और तुम्हारा क्या सिलेबस में दिया हुआ उन्होंने? हाँ ना, आज मैं करवाया आखिरी क्वेश्चन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये करवाया। लेटेंट हीट का वो कराया एमएल। हाँ वो करवाया। दिमाग खराब है यार, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनको कैसे नहीं पता चला कि नहीं है। उनसे आप कहें, उनके पास लर्निंग कंटेंट ले जाएं, उनसे कहें सर मुझे इसमें बताएं कहाँ है। नहीं तो कैसे भाई, सीई में जो नहीं है वो आपसे कैसे पूछ सकता है? क्या आप मुझे कोई एविडेंस बता सकते हैं? दे दें तो बेटा सिलेबस है ना, सीधे सीधे गूगल टैब पे लिखो 0625 सिलेबस, खुल जाएगा। कंटेंट रिमूव्ड, कंटेंट एडेड सब आ जाएगा। क्या करते हैं लोग पता है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है इन, उनको बोल दो कि भाई आपने पूरा 6-7 चैप्टर्स का सेक्शन छोड़ा हुआ है, 2025 और 4 में पेपर है, आप कैसे कराएंगे? आपको उन्होंने स्पेस फिजिक्स करा दी, रेडियो एक्टिविटी करा दी, आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं कराई जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, स्पेस फिजिक्स नहीं कराई जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पूरा नहीं कराया जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, तो आपके 12, आपका आधा सिलेबस रहता है क्या वो 2 महीने में कवर कराएंगे? ये बुक 2 है ना, तो इसमें आपके ग्रेड 10 का कंटेंट पूरा कवर्ड है, यानी लाइट वेव्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नहीं है, और हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बस, बाकी जो 2 बुक्स है मेरी, तो उसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अभी एटीपी की दूंगा एक आध दिन में बुकलेट, वो आई भी है पड़ी भी है, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो तब दूंगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो 2 चैप्टर्स हैं, चलो मान लीजिए एक चैप्टर बहुत सिंपल सा है, वो केमिस्ट्री से लिंक करता है एटॉमिक फिजिक्स, लेकिन मसला ये है कि फिर भी हम जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ छोड़ा हुआ है, वैसे हम ये भी नहीं करते, हम रेडियो एक्टिविटी सेकेंड टर्म पे छोड़ते हैं बस, लेकिन नया टॉपिक ऐड हुआ है जो स्पेस फिजिक्स का, उसको भी हमने सेकेंड टर्म पे कर दिया। बाकी सिटी स्कूल में तो हम रेडियो एक्टिविटी भी पहले करा देते थे। अभी हम लोग जो है ट्यूशन में Sir, can you please scroll down to show the complete diagram? हाँ मैंने सुन लिया। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ट्यूशन। अरे ट्यूशन की तो फिक्र नहीं करो ना, ट्यूशन की तो फिक्र, वो तो मैं 0 से एंड तक सारा समझाऊंगा, सारा कराऊंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, उसके लिए तो टेंशन नहीं लो। लेकिन मैं परेशान उन बच्चों के लिए हूँ जो ट्यूशन नहीं जाएंगे और सिर्फ स्कूल में पढ़ेंगे।
मेरे को बोला है ना वो बोले आप आपका आधा सिलेबस रहता है। सर एक लड़का है बता रहा है किसी और के पास। वो जो भी है मतलब जुल्म है ना, आप पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। क्या पता कर ले सर, अल्लाह की बेटा भगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, पास पेपर्स भी तो करने होते हैं। आप क्या कह रही थी बेटे? हाँ उसमें टीचर क्या करता है, हमें सर शायरी है मेरा शाकिर है। क्या करते हैं वो पूरा मतलब आपने भी करवाया ना ये वाला ये रिफ्लेक्शन वगैरह एंगल लेंसेज वगैरह, तो वो पूरा करवाते हैं मतलब पढ़ाते पूरे पे, एंड में जब वो पास में होते हैं तो बच्चे का माइंड ब्लैंक हो जाता है ये हमने कब पढ़ा था। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इसके ताली मारना इसमें शांत का आएगी ट्यूशन इतना बुरा लगा चलिए तो वो आज तो आई भी नहीं है, तो उसको दोबारा बुरा लगेगा जब ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। उसको कूटना आप मिले आपने इतनी अहम क्लास मिस की, और थर्सडे की क्लास की दूसरी बार उसने मिस की है। उसको तेरे भी करके कुछ मजा आया। हमने पढ़ा था वो स्टैटिस्टिक्स B1 का पहले क्वेश्चन का आंसर सी है ये चेक करें। वो होता है 3 घंटे पूरे स्टैटिस्टिक्स पूरा सारे सॉल्यूशन समझ भी बने। डन कॉपीड। ये डायग्राम किसने नहीं बनाई थी? ओके बेटा जल्दी करो, उन्होंने बना लिया। मैथ्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है पूरा। रिकॉर्डिंग देंगे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग 3 घंटे की नहीं, उससे आगे ना अगर जब पूरा पहली बार पढ़ा है तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया तो वो वाली सर ये सही है ये गलत है तो मैसेज कर दो उस पे तो मुझे बेहतर है रिकॉर्डिंग उनको भी टेलीग्राम पे व्हाट्सएप दो नंबर सही है। आर यू श्योर? हाँ गुड। सही है सही है। ये हमसे क्यूज है ना जाहिर। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोर क्या आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए? और ये sin cos की तरह होगा ना? नहीं, sin cos की जरूरत ही नहीं है इसमें। sin से ये कैसे होगा? मुझे बता दो। पता नहीं। और कैसे बातें कर रहे हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। मेरी गाड़ी आ गई। हिबा या शानज़े किधर हैं आप? बेटा क्लास तो खैर हो भी गई, मैंने क्लास के एंड पे आपको फोन किया है। तो बंदा बताता तो है, मुर्ख का नहीं है क्या बायो का पेपर? नहीं मुर्ख ने छुट्टी की है, इसलिए छुट्टी की है। अच्छा अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। कल बायो का पेपर है, कल बायो का कहते इसीलिए वो भी नहीं है, उसने खुद से बताया, मैंने कहा नहीं। अब कुछ भी नहीं बताना उसको भी, अगली क्लास में उसकी। चलो अरे 2 मिनट ऊपर से बायो की एटीपी के लिए उसने छुट्टी की है। अस्तगफिरुल्लाह। बेटा एटीपी किसी भी साइंस का मुश्किल नहीं होता। बेटा फिजिक्स की आपने की कब एटीपी? आप मेरे साथ एक पेपर करोगे ना, यू विल बी ऑल ऑन द वे। आप सारे मैं मेरे साथ एक पेपर करो, यू विल बी ऑल सेट। मैं बता रहा हूँ ना इंशाल्लाह। सर वो 10 दिन की छुट्टी मिली ट्यूशन में। कोई नहीं, हफ्ते की कोई नहीं। सर आगे ने बोल दिया हफ्ते की छुट्टी। सर आगे ने बोल दिया इंटर वेकेशन जो थी
बेटा तो सरा मैथ्स की छुट्टी है ना, फिजिक्स की थोड़ी है। क्या यार, अरे पूरा सेंटर बंद होगा भाई, कोई नहीं है। काम करो बेटा, काम करो। ये मुझ में मुंह सा मुझे बनाकर बुलवाएंगे। आपको पता है मैं विंटर वेकेशन में सारा सिलेबस खींचता हूँ। विंटर में सब लेजी हो जाते हैं। हाँ नहीं, और एटीपी के मैं जो है पूरी वर्कशॉप्स कराता हूँ विंटर में। आप लालच दे रहे हैं मुझे। लालच कोई नहीं देना, आप भले ना पढ़ो, फायदा मेरा है। फीस तो दोगी ना अभी पहले। हाँ बस फीस दे देना, फिर छुट्टी करना मत, भले आप फिर जून जुलाई में भी नहीं हो। आप देख रहे हैं कितनी गलत बात कर रहे हैं। जून जुलाई में पेपर खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 40 करना है, इसको डिवाइड करना है क्या? डिवाइड नहीं करना बेटा, आपके पास जो है पूरा 80 है। जी अहमद भाई। Sir, can you scroll down? मरियम मैं आगे चला गया। मेरे एक टीचर थे, वो वैसे ही फास्ट फास्ट लिखते थे ना, अब मैं पीछे रह जाता था, लेकिन उन्होंने मुझे भगाया, फिर मैं सेट हो गया। सो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, नो वरीज। नहीं आज सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होने के, बस आपने घबराना नहीं है, करते जाए। It's basically the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction. लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई क्वेश्चन है क्या? कौन सा वाला? क्वेश्चन 30 तो मैंने दिए ही है, मैंने क्वेश्चन पूछना है नहीं। देखा मैंने क्या करा? रिफ्लेक्शन करा है मैंने, रिफ्रैक्शन नहीं करा। तो ये भी बता दें कैसे होता है? ये वाला करंट बता कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा था। ये वो है ना sin? जी मैं सही कह रही हूँ। sin तो गुना होता है। एक ही बात है सर, दुनिया को दिखा रहा है। नहीं जरूरी नहीं है। तो ये देखो अगर यहाँ पे ये 80 है, ये हमारी ये क्या है? एंगल इंसिडेंस नहीं हाँ है इंसिडेंस ये रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है कि अगर ये 80 है तो ये पूरा इसको हाफ कर देंगे और ये 40 होगा, ये 40 होगा तो ये 40 होगा, ये 40 होगा। ना मैं जा रही हूँ, गाड़ी आ गई है। बेटा अभी टाइम नहीं हुआ, आपकी गाड़ी टाइम से पहले कैसे आती है? हाँ चलो जी अल्लाह हाफिज़, ठीक है। हाँ मैं सिर्फ उनके लिए बैठा हूँ जिनका भी जो है कुछ कॉपी करना है, बाकी चलिए। बल्कि भाई आई विल एंड द क्लास बिकॉज मसला ये है कि मेरी बॉयज की भी क्लास शुरू हो गई है। Sir, please scroll down. Alright. Okay, all of you just take a screenshot. I'm scrolling it down so that you take a screenshot. हाँ? ये नहीं, ये मेरे दरवाजे में फंस गया। दबते हैं? नहीं। Okay, screenshot लो बेटा। Done? Yeah, done. Alright. Screenshot of this as well. Done. This too. And this is the last thing. So, girls, I hope it was easy class. Everything was understood well. Yeah. All right. So, in the next class, that's tomorrow, we are going to be doing a refraction, inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Allah. Allah Hafiz.